Jai Hind students. In this session, we will discuss about circular motion in horizontal plane. Circular motion in vertical plane हम डिस्कस कर चुके हैं. अब सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं. In this diagram, a particle of mass small m is attached with a string of length small l. क्या किया है? m मास के एक पार्टिकल को l लेंथ की स्ट्रिंग से हमने अटैच कर दिया है, जो a पॉइंट के ऊपर भी जुड़ी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. यहां पर मान लेते हैं कि जिसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है. व्हाट इज सपोज ओवर हियर? A particle of mass m is attached with a string of length small l and which is executing horizontal circular motion, uniform horizontal circular motion with constant angular velocity omega. Clear? At point B, weight of the particle mg is acting vertically downwards. Tension in the string is acting towards A, through which this particle is suspended. तो यहां पर टेंशन को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो देखें यहां पर एक ट्राइंगल हमें मिल रहा है. दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो बेस कंपोनेंट हमें t cos थीटा मिलेगा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर हमें t sin थीटा मिलेगा. मींस t cos थीटा इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द पार्टिकल, whereas the component t sin theta is providing necessary centripetal force for circular motion to this particle of mass small m. Clear? Therefore, if v is supposed to be the linear velocity of the particle, then centripetal force mv square upon r. Here r is radius of circular path, o is center of circular path. mv square upon r means the centripetal force acting on the particle. As it is supposed that it is executing uniform circular motion with constant angular velocity omega, therefore this expression can also be written as m omega square r. This is provided by t sin theta. Let this is equation number 1. From the diagram it is also clear that weight mg is balanced by component of tension t cos theta. Let this is equation number 2. Divide equation number 1 by 2. We can write t sin theta upon t cos theta equals m omega square r upon mg. T is cancelled out, m is cancelled out, or tan theta equals omega square r upon g. Let this is equation number 3. Clear? In triangle OAB, tan theta equals OB upon OA. Tan theta equals, what is OB? This is radius of circular path, small r. And what is OA? If we find out the value of cos theta in this triangle, then we will have OA equals L cos theta. Getting it or not? देख लेते हैं कैसे है. In the same triangle
OAB cos theta equals base upon hypotenuse OA upon AB. Therefore OA equals AB cos theta, or OA equals, what is AB? This is length of the string with which the particle is attached, that is L. Therefore OA equals L cos theta. तो ये जो OA L cos theta इस तरह से आता है जो हमें यहाँ पर पुट करना है. क्लियर? Let this is equation number 4. From equation number 3 and 4, what we can write? Omega square of R upon G equals R upon L cos theta. R is cancelled out, or omega square equals G upon L cos theta, or omega angular velocity equals under root G upon L cos theta. Got it? Using this expression we can find out time period as well as frequency of the particle. Since time period t equals 2 pi by omega, therefore t equals 2 pi upon omega. If we put the value of omega over here, we can write 2 pi under root L cos theta upon G. ओमेगा यहाँ पर अपॉन में है, तो ये अपॉन में होने की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, देन वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. Therefore frequency nu equals 1 upon 2 pi under root G upon L cos theta. This is the expression for frequency of this particle. Got it?